जय माता दी आदेश नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग वेलकम टू द इवनिंग सेशन ऑफ मार्केट एनालिसिस मेरा नाम है विशाल and this is 597th episode of live analysis. So today again we had a great day in Nifty and Bank Nifty. Markets moved up exactly as per our expectation. We were holding longs from Friday. I updated in the group also in the morning that we are still holding, and we have continued to hold the long trades in the Nifty and Bank Nifty. So we will discuss markets today, and let's come up with a trading plan for tomorrow's session. And before I proceed further, just a request that you can support the channel by pressing the bell notification button, pressing the like button, and do comment, do subscribe. And also, today is 4th, and the next upcoming training is scheduled on July 10th. So, hardly any days are left. So, if you wish to join for this training, you can WhatsApp on the number given here, and you can register yourself. Once you register, you will be added in our Telegram group for a period of 4 months. And this is a very important training because post this training I am not sure if I will continue with the live session. So I need some break. So probably the live sessions will only be for our group members. So all the students who are there in our Telegram group, it will only be for them. And for few weeks, few months, I won't conduct live session on YouTube. So this is your opportunity to become a part of it. Not only you will get the training, but benefit from the Telegram group as well. Okay, now let us start today's session. So, US markets are closed today. That is why nothing much is happening in the evening session. We can see European markets are bullish, but marginally bullish. S&P 500 futures are trading a flat. This slightly negative, but I would consider it as good as a flat. We had a very nice session on Friday. We can see this big bullish candle, a very nice double bar low higher closing sort of a candle, and S&P 500 is sitting on a potential breakout point. So if we start to take off higher from this, we are definitely going towards the 4041 area, 4040 level, which is also the 65-day moving average coming from the higher levels. So I think this is the trajectory going forward in the US market. I'm bullish on the US market in the short term. Overall, we are in a bear market, in a long term bear market. But for the time being, I think we are bullish and we are good to go. Any dip that comes till say 3720 is a buying opportunity for a target of 4050 thereabouts, and later on we will see what happens. So we have been in this long declining market, uh, right? And I believe we have made some sort of good bottom over here, and this was the first move on the higher side, followed by a correction. And now we should start some bigger retracement of this entire decline. We should start a bigger retracement to begin with. 4050 thereabouts, these are the pretty good resistance level, right? So that is the view in the US market. Let's talk about forex market right now. uh, Euro, USD, British pound, US dollar. Let's talk about these. So US dollar is again not much of an activity is seen. Flattish है आज, कोई खास movement नहीं है. Euro और British pound में एक अच्छा comeback हुआ है, but I think they are still bearish. And tomorrow when the North American markets open, I think the euro will again go lower. So euro जो है, British pound and euro today, because in the absence of the US market, they got an opportunity to do some pullback. But I think the euro is sitting on a time bomb. I mean, this triple bottom over here, it must break down. It must flush through these triple bottom, and possibly if it comes back higher again, then we will look for a long opportunity. So right now we are in this down sloping, pitchfork. We are in this larger and the medium term to long term bear market in the euro, and we are at a culmination point over here. We should drop, break these bottoms over here,
and then we will see what to expect. Overall, I think they will flush through and then they will stage a bounce like this. So that is our preparation. Now, how the NSC Forex futures will behave, I will talk it separately. आज से जो है हम NSC Forex futures को अलग से कवर करेंगे with their charts, so that might help traders to position in the market. ब्रिटिश पाउंड की बात करेंगे तो फ्राइडे के दिन जो है एक हैवी डिक्लाइन देखने को मिला था. आज यूएस मार्केट बंद है तो थोड़ा सा इसमें जो है एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है, बट स्टिल आई एक्सपेक्ट वन मोर ड्रॉप टू हैपन, समथिंग लाइक दिस. But I think it is on the verge of making a very fine bottom overall in this area. So one more drop should come, but the euro and the British pound, they have a very good chance to bottom out. We are in some sort of a last leg of a decline, of a major decline, and once we are done with it, I expect the US dollar to turn bearish, do some mean reversion. We are in the second half of this financial year. US dollar is already making a potential rising wave structure like this, so we have just made a marginal new high. So probably we will, some sort of choppy moves are expected, and then we should head lower. Once we see the reversal in the US dollar, that will simultaneously coincide with an up move, and up move followed by a bottoming structure in the euro and in the British pound. That will also be followed by a top in the USD JPY, so which is higher today in the absence of dollar. It's also higher today, but I think these are in their last leg. So interesting times are ahead, because once we capture a reversal in the forex market, what happens is, if you are on the right side of the trade, you will benefit in all the currencies. So whether you trade the euro, British pound, or the yen, you will benefit if you are on the right side of the capital flows. यानी अगर आप forex market के right side में हैं, ठीक है. So that's the update coming over there. Chinese yuan इस पे नजर है मेरी, because it is going to give a explosive move. So metal sector जो है, चाहे metal stocks हैं या जो commodities में है, तो यहाँ पे हमें बहुत ही careful रहना है, because this has to do a catch up. So I think ये थोड़ा सा जो है सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा, एंड दैट विल क्रिएट सम रिपल इफेक्ट इन द शॉर्ट टर्म इन द मार्केट्स. यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 79 के आसपास जो है स्ट्रगल कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से. अभी भी हम बुलिश हैं यूएसडी आईएनआर में, बट not a outright bullish as such. So 80 is the psychological limit for this market. इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि 80 जो है ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है. आरबीआई इज नॉट गोइंग टू अलाउ rupee so easily to trade above 80 rupees, and I think we have done fairly well. If you remember, in all these months, since last 3-4 months, I have been bullish on the USD INR in a slowly and a staggered manner. And since we came at 75 in the month of March end, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो USD INR consistently it has gone up in a very slow and staggered manner, but it has gone up. The direction has been up. So we have depreciated by 5 rupees, almost 75 से 80 तक हम आ चुके हैं, right? Now see, this is a very simple trade that any good large investor or a trader should have taken, right? So that is why I always encourage कि forex market में जो है आप उसको भी सीखिए, उसमें भी trade करिए, because these are simpler markets to trade. Once you get some experience, once you understand the macros, then it becomes very easy to manage the forex trades. मैंने काफ़ी लोगों को ग्रुप में सिखाया भी है, काफ़ी लोगों को पिछले 1 सालों में मैं कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग में भी हमने जो है फॉरेक्स को थोड़ा वेटेज दिया है. सो वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट टू throw light on all the asset classes, like forex, MCX, stocks, and equity index trading. So forex is a very interesting market to be in. Now let's have a look at the NSE Forex futures. So now I will talk in terms of the NSE Forex futures. तो अगर हम बात करें USD INR फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की, तो हम देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें. 79 रुपीज आपका सपोर्ट है, राइट? सो 79 इज द प्लेस टू इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड. यू कैन कीप 10 पैसे का स्टॉप लॉस, and targets can be 79.3, 79.5. So this is the current month contract of the USD INR futures. Now
do keep in mind that this level over here, which is say 78.90, ये आपका major support है. Okay, so there is one support here which is 79, and then there is 78.90. So I would suggest that, if you get USDINR in this bracket over here till 78.90, I think we should be buyer in the USDINR, and we can keep probably, say 78.5 as a stop loss. So we can look to buy in this zone. I would write 78.90 and keep a stop loss of 78.5, and then we should target to take out the open high of this candle, which is 79.60, right? So pretty much we are targeting 79.75, which is the psychological number towards the mark of 80, and that is where the RBI is going to come back. So I think this is a very good trade setup, ज़्यादा रिस्क नहीं है. और अगर क्लोजिंग बेसिस पे 78.80 के नीचे क्लोज हो रहा है, then you should exit, okay, because this support is very nice. It's based on one of our proprietary method of trading which we teach in the training. So I can't disclose, but yeah, this is a very good place, and overall we have a very nice supply demand level also. So that is a very good trade. I think we should take that trade. Next is the Euro INR futures, and do let me know how do you like this new version of Forex analysis, where we discuss the spot and then the NSE futures also. Now the Euro INR, see the Euro INR, the spot Forex that tells us Euro USD, that it is most likely to break these triple bottoms, right? So if we look on the NSE Forex futures, we see that there are tons of resistances at 83 rupees. ठीक है, 83 rupees के अगर आप लेवल को देखेंगे तो that is the place where you can see lot of resistance, right? So हमने इसे ब्रेक किया था. So 83 दोस्तों, 83 से लेके ये जो आपका है 83.10, this is a major resistance level. We have broken this declining trend line, but इस पे बहुत ज़्यादा हमें ट्रस्ट नहीं करना है. वी हैव अ सिवियर सप्लाई कमिंग एट 83, साइकोलॉजिकल लेवल है. दिस इज द फ्लिप जोन, दिस वाज सपोर्ट, हमने इसे गैप से ब्रेक किया है, और ये पूरा गैप डाउन जो है 83.50 तक, ये अनफिल्ड भी है. सो यूरो आईएनआर में मेरा व्यू जो है फिलहाल के लिए बेरिश है. सो फॉर टुमारो सेशन वॉच आउट फॉर एग्जैक्टली 82.95 और 83. तो मैं लिख देता हूँ कि 83 दैट इज द प्लेस, या 82.90 दैट इज द प्लेस. यहाँ पे जो है हम इसे शॉर्ट करेंगे. ओके, वी विल लाइक टू शॉर्ट इन दिस जोन फॉर अ राउंड ट्रिप all the way towards this bottom which is near 82.3. तो ये एक ट्रेड होगा यूरो आईएनआर पे, और हम 83.20 को एज अ स्टॉप लॉस, यानी राउंड फिगर कर देंगे, 83.25 को राउंड नंबर कर देंगे, दैट विल बी अवर स्टॉप लॉस. सो इसके ऊपर गया तो हम निकल जाएंगे. व्हाई? देयर इज अ अनफिल्ड गैप, सो इट विल गो ऑल द वे टिल 83.50, एंड वहां तक हमें वेट नहीं करना है. देयर इज ऑल्सो एन अनफिल्ड गैप ओवर हियर विच इज ऑल द वे टिल 83.75. सो हमें इसमें ट्रैप नहीं होना है दोस्तों, सिंपल सी बात है. 83 इज अ राउंड नंबर. अगर बेरिश है तो 5-10 पैसा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है, बट ओवरऑल इट शुड कम डाउन. नाउ एज अ प्रैक्टिकल ट्रेडर, आपका पहला जो प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए दोस्तों, वो आज के वीवैप पे होना चाहिए, विच इज 82.70. सो पहला जो बुकिंग है हम 82.65 पे कर सकते हैं. ओके, देन अगेन सेल ऑन राइज कर देंगे अगर ऊपर गया तो, एंड देन बुक एट 82.30. सो ये एक डिटेल्ड ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो फॉरेक्स मार्केट के लिए. अब मैंने अपनी तरफ से टॉप नॉच फॉरेक्स एनालिसिस आपके सामने रखी है, जिसमें इंडियन पेयर्स और जो स्पॉट मार्केट है दोनों को हम कंबाइन करके आपको बता रहे हैं एकदम एक्शनेबल ट्रेड लेने के लिए, ठीक है. सो आई थिंक आज के वीडियो में मुझे कम से कम 200 लाइक चाहिए. ओके, सो दैट्स द फॉरेक्स यूरो अपडेट. ब्रिटिश पाउंड को देखते हैं. तो व्हाट इज द बिगर पिक्चर कि ब्रिटिश पाउंड जो है वो एक और बार नीचे जाना चाहिए स्पॉट मार्केट में. और हमारे आईएनआर के टर्म्स में क्या सिचुएशन है कि आईएनआर के टर्म्स में जो आपका जीबीपी आईएनआर है, अगर हम इसको एक बार इसका अगर डेली चार्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो इट सजेस्ट दैट जो अभी ये जो बॉटम आना था 95.3 के आसपास, आई थिंक दैट इज अ फेयरली डिसेंट बॉटम टू गो विथ. 95
95.3 95, आई डोंट थिंक कि जीबीपी आईएनआर इसके नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो बट अभी इमीडिएटली देयर इज अ बिग हर्डल नियर यू कैन से 96.5 के आसपास, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे डील करता हूँ, ऐसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि फिलहाल जो है हम immediate trade basis पे let us see what we can do. So there are heavy supplies sitting near what 96.5, right? So at 96.5 there are heavy supplies, we can see here यहाँ पे uh, triple resistance है 1 2 3, then this was a support and this big cluster, right? और यहाँ पे एक resistance हमें दिख रहा है immediately 96.25 पे। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा सप्लाई जोन है 96.25 से लेके 96.5, दैट इज द प्लेस जहां से जो है ना हमें शॉर्टिंग करना है, ठीक है। तो अभी मैं जीबीपी आईएनआर में लॉन्ग हूं, मैंने एक दो दिन पहले भी बताया था। सो आई बॉट इन पैनिक ओवर हियर, व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ गैप, right? So this gap got filled, and because I am very good in forex, so I bought and I benefited. So I am out now. नाउ अब हम क्या करेंगे, सपोज आपका कोई भी लॉन्ग है तो आप इस एरिया में निकाल सकते हैं, एंड वी वुड लाइक टू सी व्हाट इट डज एट 96.25 से लेके 96.5, राइट? सो वी वांट टू सी इट टम्बलिंग फ्रॉम हियर। अगर हमें ऐसा बिहेवियर चाहिए, हमें इस एरिया में ऐसे ग्रीन कैंडल्स नहीं चाहिए, वी नीड अ ग्रीन एंड देन अ वीकर price action. So you can go on a 5 minute chart and then see if it has completed the top and starting to move lower, breaking the price pivots, so on and so forth, right? And then we can short. So ये हमारा जोन है शॉर्टिंग का। स्टॉप लॉस के तौर पे हम रखेंगे ये गैप, देखो यहाँ पे एक अनफिल्ड गैप है 96.80, 96.80, तो 96.80 ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट क्या रखेंगे? सबसे पहले आज का बॉटम रखेंगे विच इज 95.70, 50 पैसा पहला टारगेट हो जाएगा। और इसके नीचे गया तो गैप फिलिंग विच इज आपका 95.30, एंड देन यहाँ पे वापस से हम बाइंग करने के लिए इंतजार करेंगे, एंड फ्रॉम हियर वंस वी गेट अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस से बाय करेंगे अगेन फॉर दिस पेंडिंग गैप फिल 96.80 पेंडिंग गैप फिल, ठीक है। सो ब्रिलियंट एनालिसिस आपके सामने मैं रख रहा हूँ, अनबीटेबल एनालिसिस है ये। खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट आई कैन टेल यू you won't find any YouTuber in India right now doing such detailed multiple asset classes analysis with actionable trade ideas. कुछ लोग आते हैं सिर्फ ऑप्शन चेन की बात करते हैं जो कि एक्शनेबल नहीं है। जेपीवाई आईएनआर यानी यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, जापानीज येन। देखो जापानीज येन में मैं लॉन्ग हूँ पिछले काफी दिनों से, और इसमें जो है एक राउंड ऑफ अप मूव बहुत शानदार यहाँ पे मिला जिसको मैंने लॉक किया। क्यों लॉक किया? अगेन that VWAP thing. What is this VWAP secret? What is this? How to use this thing? It is not your typical VWAP. It's all covered in this training. So you should definitely learn these things. These are money making simple stuff which comes handy. So JPY में दोस्तों इस समय कोई ट्रेड नहीं है। कोई ट्रेड इसलिए नहीं है बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर इट टू आइदर कम हियर, यू नो, जहां से ये एक चैनल एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था, सो देयर इज अ अनफिल्ड एरिया। So either it comes here in this slab of round number of 58ish, 58, right, somewhere near this, so that we can buy again, so that we can, you know, buy probably trend line तो शायद break हो जाएगा, but we will buy again for again higher levels, right? So ये व्यू है कि 58 के आसपास आएगा, तो यहाँ पे 58 से लेके 57.5 यहाँ तक जो है हम बाय करेंगे, एंड स्टॉप लॉस के तौर पे हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, इस 50 पैसे में बाय करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, एंड देन द टारगेट इज टू टेक आउट दिस हाई। सो टारगेट इज डेफिनेटली यू नो मच हाइयर, 59 पहला टारगेट है, एंड देन टारगेट तो बहुत ऊपर है, ठीक है, बट 59 तो बड़े ही आराम से हमें मिलेगा। सो दैट विल बी अ वेरी बिग गेन, ऑलमोस्ट 1 rupee 1.5 rupee, राइट? सो that's the view on JPY INR. So I think I have discussed all the 4 currency pairs. So the plan is ready. Now let's see what happens tomorrow, किस तरीके से आप पोजीशन करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फॉरेक्स ट्रेड्स। अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट में जहां पे हम MCX के बारे में बात करेंगे। तो आज इस समय क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज है तो ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है, एंड यू नो नॉट द एक्टिविटी विच वी कैन ट्रस्ट अपॉन। सो आज MCX में कोई अपडेट्स नहीं है।
कल का जो वीडियो था उसमें जो मैंने व्यूज बताए हैं MCX के लिए, हम उसी व्यू को फॉलो करेंगे। गोल्ड में आज गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट गोल्ड इज अगेन गेटिंग सोल्ड ऑफ। सो गोल्ड में जैसा मैंने कल कहा था कि इसे हम फेड करेंगे एंड नो नीड टू वरी, बट हाँ अपने रिस्क को देख लेना। बट वी आर गोइंग टू फेड दिस अप मूव। सो very very nice analysis, because exactly long term pitchfork resistance पे very nice place, and we are getting that down move. So it's a short, and you can trigger shorts near 52,000 52,200। अगर पहले के भी शॉर्ट्स कुछ हैं आपके तो थोड़ा मोड़ा आप एवरेजिंग कर सकते हो, बट रिमेंबर वी शुड नॉट गो मच हायर देन 52.5। okay, so we need to remain under 52.5, and slowly we will fall back again near 51,000, then 50,000, and then below that, because in commodities market such kind of candles rarely sustain. Okay, we have historically seen in last so many years that commodity market is a different market, it's not your equity market. So here uh, there are 4 time zones that operate across the world. So if you get one big move in one time zone, the 3 time zones will ensure to nullify that effect. Once the equilibrium is reached, then if this news was correct, then the all the 4 time zones will participate again. ठीक है, so that's the logic over there. So commodities में इस समय दोस्तों कोई अपडेट नहीं है। कल हम देखेंगे क्रूड ऑयल आज 100 रुपए ऊपर है, 110 पॉइंट ऊपर है। सो क्रूड में वी आर बेरिश, और जो कल की एनालिसिस है हम उसे ही फॉलो करेंगे। राइट नाउ आई थिंक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कल ये लेगा इन द रेंज ऑफ आई थिंक सम 8800 के आसपास। ओके, दैट इज द रेजिस्टेंस जोन, सो वॉच आउट दैट रेजिस्टेंस जोन, and then it comes down, then we will look to buy. Now this is developing potentially AB is equal to CD. I think this, if it develops into a structure like this where it goes all the way till say 8150 8200, यानी इस बॉटम को थोड़ा सा ब्रेक करके, और ये अगर बुलिश होता है ना, इसे आंख बंद करके बाय करना है फिर। ओके, इसे आंख बंद करके बाय करना है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड यू विल सी एटलीस्ट 9500 इन द क्रूड ऑयल, दैट इज गारंटी। ठीक है, दैट इज गारंटी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट करेक्शन सिंस सो मेनी वीक्स। तो ये अपमूव के बाद ये सबसे बड़ा करेक्शन है। इसके पहले का करेक्शन ये है, उसके पहले का करेक्शन ये था आपका। ठीक है, सो हमने इस पॉइंट यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी, इतने दिनों में सबसे बड़ी ये करेक्शन की है, राइट? And we have moved higher. So this is wave one. If the corrective is, if the corrective A, B, C, if the corrective is, what do you say? My technical word भूल गया. If the corrective is overlapping in nature, then the third will be double of one. ठीक है, ये मेरे एलियट वेव है। ठीक है, तो ये विशाल सिंह एलियट वेव है। सो ये आपका डबल हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई 9400 9500 विल बी द टारगेट। ओके, सो वी कैन बाय समवेयर हियर जस्ट अबव दिस बॉटम अराउंड 8200, एंड देन वी विल प्ले फॉर 9400, वेरी बिग मूव। ठीक है, सो एंटिसिपेशन है, तैयारी है, लेट अस सी आने वाले दिनों में ये बिग ट्रेड हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। फिलहाल 8800 इज अ रेजिस्टेंस, जहां से अगर वीकनेस दिखता है आपको तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ये स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा से अबाउट 9000, एंड यू कैन देन कवर एट 8200 देयर अबाउट्स। ठीक है, सो ये क्रूड पे एक व्यू है। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट बिटकॉइन और इथेरियम की बात कर लेते हैं। तो थोड़ी अप मूव्स हमें दिखाई दे रही है। आज बीटीसी में 2.5% है और इथेरियम में 4% है, एंड आई लाइक दिस एक्टिविटी। आज थोड़ा फर्स्ट राउंड ऑफ some bullishness is seen, so I'm liking this activity. As of now trend down है और अभी हम bullish नहीं है, but थोड़ा सा ये देख के ठीक लग रहा है। okay, अभी भी it can crash again all the way, but as I've told yesterday that somewhere 18th of July के आसपास जो है मैं क्रिप्टोज में एक बॉटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, so in the coming days if you are bearish be very careful, इवन इफ यू आर बुलिश देन ऑल्सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि लास्ट के 10 दिनों में कुछ भी हो सकता है। या तो एक मैसिव रिवर्सल होगा, या तो एक और फिर राउंड ऑफ ह्यूज सेलिंग एंड देन अ रिवर्सल। सो इट्स बेटर टू सिट ऑन दी साइडलाइंस। सो दैट्स ऑल। नाउ लेट अस कम टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नेचुरल गैस पे भी
व्यू चाहिए, लेट मी सी। नेचुरल गैस आज तो बंद है, नेचुरल गैस मतलब यूएस मार्केट बंद है। सी एनजी बहुत अच्छी जगह पे है। नाउ एनजी में थोड़ा सा डाइकोटमी था परसों के दिन, क्योंकि जो स्पॉट एनजी स्पॉट है, एनजी स्पॉट दैट ब्रोक थ्रू द 233 मूविंग एवरेज। ओके, ये यहाँ पे क्लोज हो गया था इस ब्लैक लाइन के नीचे, बट क्योंकि करेंसी हमारा अब 75 था, अब 79 चल रहा है, तो एमसीएक्स पे इट वाज स्टिल होल्डिंग अप। सो आप देखो एमसीएक्स पे अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ है। तो जब भी कमोडिटीज में ऐसा ऑपोजिट टेक्निकल्स आ जाता है तो बहुत कठिन हो जाता है, बिकॉज यू मे नेवर नो कि किसको ट्रस्ट करें, एमसीएक्स वाले चार्ट को या कॉमिक्स वाले चार्ट को। तो एज पर कॉमिक्स वाला चार्ट बॉटम इज डन एंड सम अपसाइड, सम मतलब क्या, अच्छी अपसाइड शुड कम। बट एज पर एमसीएक्स चार्ट इसमें अब क्या होगा ऐसे सिचुएशन में कि अगर कॉमिक्स पे थोड़ा भी गिरेगा तो ये इस ट्रिपल बॉटम को एक बार ब्रेक कर देगा। तो ये थोड़ा सा ना अब ये गड़बड़ वाला मामला है। बट अगर कॉमिक्स की चार्ट की हम बात करें तो आई थिंक बॉटम इज डन फॉर सम टाइम एंड वी शुड सी सम अप मूव। तो यानी ब्रॉडली स्पीकिंग हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जैसा मैंने लास्ट वीक बताया था कि 432 का लेवल है, आई एम वॉचिंग 432। अगर मुझे ये 432 मिल गया, ठीक है, एंड अब क्योंकि हमने ट्रिपल बॉटम बनाया है तो इसे 432 को हिट करने दो और देन इट लेट इट गो हायर, तब बाय करेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो यू नो हाउ वी प्ले, राइट। सो इसके नीचे एक बार अगर चला जाए और फिर ऊपर आए, दैट इज द टाइम टू बाय। दैट विल डिनोट दैट ऑन एमसीएक्स आल्सो इट हैज बॉटमड आउट and higher targets will come, big, at least 100 points higher। ठीक है, so that is the view in NG। let us see कल क्या होता है। कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग होगा। इमीडिएटली अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 485 पे एक रेजिस्टेंस है, 485 से लेके 495, दैट इज द प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस इमीडिएटली स्पीकिंग। ठीक है, सो दैट्स द अपडेट। चलो, now let's very quickly let's move towards Nifty and Bank Nifty and let's do the analysis over there। so what a great day today because अगर आपने दोस्तों कल का वीडियो देखा होगा, so in yesterday's session I could not draw and explain but I had mentioned here कि वीकली मॉब लेवल होगा 15,680 और आज का जो बॉटम है हार्डली 15 पॉइंट उसके नीचे है ये। एंड व्हाट अ फैबुलस लॉजिक, सी दिस इज द रियल प्राइस एक्शन। वंस यू understand, you know, how the price communicates with us, once you understand the dynamics of price action, then it becomes easy to form a short term view, not long term view। लॉन्ग टर्म हम कभी भी बहुत बड़ा व्यू नहीं बना सकते, बट जो इमीडिएटली जो होता है एक दो दिन का, एक हफ्ते का, वो आसान हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज अवर व्यू कि हम तो फ्राइडे से ही लॉन्ग है, हम तो ये बॉटम से ही बैंक निफ्टी वगैरह में लॉन्ग है। आज भी हमने उसे कैरी किया है, कंटिन्यू किया है एंड आज आपको बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी था। अगर आपने इसका फायदा उठाया तो शो मी अ थम्स अप, मुझे भी पता चले कि लोग सीरियसली देखते हैं कि नहीं देखते हैं। दैट विल बूस्ट इवन माय कॉन्फिडेंस। नाउ व्हाट्स द प्लान अहेड, सी इट्स वेरी सिंपल। हम किसको रेफर करेंगे, लाइन चार्ट को रेफर करेंगे। ठीक है, सो लाइन चार्ट क्या कहता है, लाइन चार्ट ये कहता है कि कल अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप कर देता है और गैप के ऊपर जब तक रहता है, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट टिल वेयर, 16,300, 16,500, 16,700। सो ये तीन बबल्स हैं, तीन डॉट्स हैं। ठीक है, सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। कल इसकी पॉसिबिलिटी जो है कल हमने डिस्कस किया था that you know, we just need one up move and we can be done with it। so we are at a very very great place now, we just need a small up moves now। that is why I have carried the long position, क्योंकि अगर कल गैप डाउन होता है तो मुझे पता है कि लॉन्ग में पैसा नहीं बनने वाला है, लॉन्ग को काट दो, जो पैसा बना दैट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड देन गो फॉर शॉर्ट। आज के हाई से शॉर्ट करो बिकॉज ये अब ऊपर नहीं जा रहा है तो इट माइट गो लोअर, राइट। सो यू हैव अ विन विन सिचुएशन। अगर ऊपर गया तो बल्ले बल्ले, अगर नीचे गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझ के वो हिट होगा और फिर उसको जो है सेल ऑन राइज मोड में आ जाओ एंड देन प्ले फॉर द शॉर्ट साइड। सो व्हेन द आउटकम्स आर वेरी you know easy, when the outcomes are very objective in nature, that is the time when you should you know play big in the market। and when there is some subjectiveness, that is the time when you should just you should be out of the market। so अब कल के लिए क्या मॉब लेवल होगा, कल की क्या प्लानिंग होगी, लेट अस सी। एक बार
डिमांड सप्लाई एक बार हम प्रोफाइल चार्ट्स को भी देख लेते हैं. लेट अस see if the charts are coming up. Let me see. Yeah. So what I liked about today's price action is that we have consolidated a lot near 15,750. Okay, and that was the gap down area. So this was the gap down area. This was the gap down area, and we have spent considerable amount of time in that. So we have basically filled that place. So needless to say, 15,000 like 700 is going to be a solid support for this market. So even if there is no further up move, keep an eye on 15,700. That will generate some intraday bounce also. Even if case it turns bearish, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है. ठीक है, सो प्रोफाइल जो है काफी शानदार है. आज हमने पूरा दिन जो है मार्केट में लॉन्ग ही थे, कोई दिक्कत नहीं था. एंड आई हार्डली मैसेज्ड एनीथिंग इन द ग्रुप. आई जस्ट सेड कि आई एम होल्डिंग लॉन्ग्स, पेशेंटली बैठो और मार्केट जो है रिवॉर्ड करेगा. और बैंक निफ्टी में देखो, मैसिव बैंक निफ्टी में हमने दोस्तों यहाँ से बाइंग की 33,175 एंड स्टिल रनिंग द ट्रेड. 1000 पॉइंट्स इसमें भी हो चुका है. अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल हम क्या अप्रोच कर सकते हैं? सी, एक चीज बड़ी ऑब्वियस है दैट वी नीड अ गैप अप ओपनिंग टुमारो. जैसा मैंने अभी डेली चार्ट पे आपको बताया, हमें इसके ऊपर खुलना है. सो रूल नंबर 1, इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग अबाउट दिस, आप लॉन्ग को कैरी कीजिए. या अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो आप यहाँ बाय कर सकते हो. बट आज के क्लोजिंग के नीचे, यानी 15,820 825, इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो. So you can look to buy whatever gap up it's happening. You should know how to play the gap. If you know, it's very good. So आपको जो है यहाँ पे बाय करना है 15,820, ये इसके नीचे का, इस क्लोजिंग के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो. एंड द हायर टारगेट्स विल कम. बट मॉब लेवल क्या होगा? मॉब लेवल होगा 15,770 वाला जोन. ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट ओवर हियर दैट द मेक और ब्रेक लेवल, ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल फॉर टुमारो इज 15,765. लेट्स राइट इट दैट वे. 15,765 ये जो एक ब्रेकआउट जोन है, और ये आज का ओपनिंग रिजेक्शन जोन है, दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट इन केस ऑफ अ डिक्लाइन. So 15,765, that's the place where you should again look to buy, and probably day high should be your first target. So हमारा पहला जो टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 15,925. that is the first target, and second target will be 16,050. 16,050 दो टारगेट्स हैं, 16,050, 15,950. आई बिलीव अगर कल हम थोड़ा गैप अप करने में कामयाब होते हैं तो हम 16,050 को डेफिनेटली कल ही हम टेस्ट करेंगे. नॉट ओनली दैट, अगर ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हैं तो हम 16,100 को भी कल उखाड़ के फेंक देंगे. ठीक है, सो दैट इज द मोमेंटम. सो वी हैव बेसिकली कंटिन्यूड द मोमेंटम दैट केम फ्रॉम फ्राइडे. सो 2 days ऑफ कंटिन्यूएशन मूव, दैट इज वेरी नाइस. बट सिंस आज यूएस बंद था तो हम दोनों साइड का ही पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए. अच्छा, सपोज अगर बेरिश होता है मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, फॉलो द मॉब लेवल. मार्केट अगर उसके बाद इसे भी ब्रेक करता है तो सारे लॉन्ग से हम निकल जाएंगे, बिकॉज एज पर अवर लाइन चार्ट, एज पर अवर हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, मार्केट मस्ट ब्रेक द 800 850 levels for a breakout. If it doesn't happen, then again the story repeats. We are again going to 645. So 15,645 पहला टारगेट हो जाएगा, एंड देन प्रॉब्ली 15,600 ये दूसरा टारगेट हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके से हम कल देख रहे हैं निफ्टी स्पॉट को. ये सारे लेवल्स निफ्टी स्पॉट के थे. डोंट कंफ्यूज विद निफ्टी फ्यूचर्स. लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी वेरी क्विकली. सो बैंक निफ्टी में दोस्तों एकदम सिंपल डिम्पल था आज, कि फ्रेश बाइंग भी अगर आपको करना था तो मॉब लेवल वगैरह दिया गया था, आप उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते थे. Now why I continue to hold the position? See, look at this. This is the first 30-minute candle. ठीक है, अब जिसने भी प्राइस एक्शन ट्रेनिंग अगर सीरियसली आपने अटेंड किया है, ठीक है, सो यू नो व्हाट टू डू व्हेन सच candles are formed at a specific position. So this candle gave me the strength, gave me the confidence to continue to hold the long trade. And for so many hours, these are 30-minute candles, so 1 2 3 4 5 6 7, almost 3 ghanta, I had to simply hold. I had to show that resilience, and then it got rewarded in a single candle. So contextual understanding बहुत जरूरी है बाजार में.
ठीक है। सो ये कैंडल ने हमें एक चीज तो कंफर्म कर दिया कि अबाउट दी दिस बॉडी वी आर डेफिनेटली फिलिंग अप द गैप। सो पहले तो ये होता है। फिर अगर गैप के बाद इसे नीचे आना होता तो सबसे पहले मार्केट क्या करता, प्रीवियस डे हाई के नीचे जाना शुरू कर देता। सो दिस वाज द प्रीवियस डे हाई। What Bank Nifty did is it chose to take support, made a bullish engulfing candle on 30 minute. Overall made a flag pattern, right? Overall made a flag pattern. So this is the continuation and then the breakout. अंडरस्टैंडिंग। सो इस तरीके से सीक्वेंस में हमें चीजों को सोचना है। आपको यू हैव टू टेक योर चांसेस बट इन अ कैलकुलेटेड मैनर। समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज, बट यू नीड टू स्टिक टू दोज प्रोसेसेस। ओके, तब जाके लॉन्ग रन में आपको इस तरीके से सक्सेस मिलता है। नहीं तो फिर कभी ये कभी वो करोगे तो फिर एवरेज आउट हो जाओगे। ठीक है। सो फार सो गुड ऑन दी बैंक निफ्टी पार्ट। अब एक बार हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या पिक्चर है एंड देन वी विल टेक ऑल योर स्टॉक क्वेरीज। सो बैंक निफ्टी में दोस्तों एक अच्छी चीज क्या हुई है निफ्टी के मुकाबले, लुक एट द क्लोजिंग बेसिस चार्ट। सो वी हैव मेड व्हाट डू यू कॉल दिस, a series of higher highs, higher lows, right? With respect to this bottom I'm talking, not with respect to this declining structure. So we are successful in making a series of higher lows. We have crossed the 21-day moving average, which was a resistance last time. Nifty is yet to close about 21-day moving average. So who drives the Nifty? Bank Nifty, correct? So if Bank Nifty is giving us that evidence that I am okay to trade about 21-day moving average, I am okay to close above the previous resistance, so shouldn't you keep the long trade? That is precisely the reason. ठीक है। सो बैंक निफ्टी की बिहेवियर जो है काफ़ी अच्छी आज मैं समझता हूँ, काफ़ी अच्छी बिहेवियर है। प्रोफाइल इज़ वेरी हैंडसम, एवरीथिंग इज़ नाइस। अब जो हमने कल डिस्कस किया था कि 33,800 वी मस्ट ब्रेक अबाउट दिस एरिया, दैट इज ऑल्सो डन। ओके, सो दैट इज ऑल्सो डन। सो ये एक अच्छी चीज़ है। अब हम दोस्तों कैसे इसे अप्रोच करेंगे, वेरी सिंपल। जो 21-डे मूविंग एवरेज जो आपका रेजिस्टेंस था वो हमारा अब सपोर्ट हो जाएगा। सो वी विल go with the simple price action of this structure. So where is the last breakout point? This is the breakout point, ठीक है, and this is the support point. So 33,700, this is your mob level. Okay, so henceforth going forward always remember 33,700, 650 50 point, that this is the mob level. Above this we are bullish. Now tomorrow Bank Nifty if opens gap up, it will take out this high. So the first target stands at 34,000 say 150, second target is 34,400 rupees. ओके, ये दो टारगेट्स हैं। अगर कल गैप अप खुलता है तो मैं समझता हूँ दोनों टारगेट जो है बैंक निफ्टी हिट कर देगा। सपोज अगर फ्लैट खुलता है एंड इफ इट कम्स डाउन तो हम बाय करेंगे विथ हार्डली 33,500, 200 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस है। एंड इफ इट चूजेस टू गो हायर, वेरी वेरी ग्रेट ट्रेड ये हो जाएगा। सो दैट्स इट। एंड बिलो द मॉब लेवल कोई भी लॉन्ग को हम कैरी नहीं करेंगे, because that would mean that on higher time frame you went above the resistance of 33,800 but could not sustain. So you have completed this up move from say point A to point B and now back to pavilion, ठीक है ना। सो इसलिए 33,700 के नीचे गया तो सारे लॉन्ग्स को जो है कट कर देना है, चाहे आपने फ्रेश किया हो चाहे पोजिशनल किया हो। तो इसके नीचे बाजार फिर से जो है बेरिश हो जाएगा और 33,500 पहला टारगेट हो जाएगा। आइडियली 33,350 आपका एक्चुअल शॉर्टिंग का टारगेट होगा। ठीक है। सो हम कल के लिए बस इस लेवल को लेके चलेंगे, इन लेवल्स को लेके चलेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप माय एनालिसिस is helping you in terms of trading, in terms of understanding the market, and also in terms of understanding how to do technical analysis. That is more important. So that's all I have to offer right now, and we can take some stock queries. Stock queries से बात है, heat map को देखते हैं। TCS minus 2.5%, so that did the big damage. And as I have been saying that this market will move higher, right, because of the index management. तो मैंने आपको दोस्तों बॉटम जब बन रहा था उन दिनों में ही ये आपको चार्ट दिखाया था कि जो हमारे हैवी वेट काउंटर्स हैं
HDFC बैंक, HDFC, TCS, इन्फोसिस, कोटक, ICICI बैंक एंड रिलायंस। तो हमारे ये जो ऋतिक स्टॉक्स हैं इनका ये चार्ट है, एंड दैट टोल्ड अस वेरी सिंपली दैट बॉस मार्केट का बॉटम तो बन चुका है। दिस इज, जिन्हें भी पिचफॉर्क में सिखाऊंगा आपको पता चल जाएगा उस टाइम पे कि क्यों ये बॉटम है। सो बॉटम बन चुका है। अब ये चॉपी तरीके से जो है ये बाजार इंडेक्स यानी इंडेक्स मेंटेन रहेगा बट चॉपी तरीके से ये जो है मूव होंगे। सो यू सी, आज रिलायंस फ्लैट बट TCS डाउन, इन ICICI 2.5%। सो वेरी क्लासिक वे ऑफ मैनेजिंग द इंडेक्स। अगर हम डेटा की बात करें, डेटा इन द सेंस नॉट योर स्टूपिड ऑप्शन चेन बट लुक एट द नंबर्स। सो द नंबर स्पीक्स। यू सी FMCG आज जो है 2.5% ऊपर था, राइट? ITC एंड अगेन HUL, rising inflation. FMCG is always bullish in a rising inflationary environment because they can pass on the cost to the end consumer, right? So आप देखिए कि FMCG सेफ एक थोड़ा मार्केट ने आज खेला है, एंड फाइनेंशियल्स में एक अच्छी बढ़त हुई है, प्राइवेट बैंक्स एंड PSU बैंक। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड मिक्स टुडे विथ प्योर index management theme. Okay, so and the small cap index, mid cap index, CNX 500, they have also somehow tried to manage, although this is not a very great sign which I would like to see, but chalo theek hai, something is better than nothing. So that's the heat map for today's session. Overall इंडेक्स मैनेजमेंट का ही है। बजाज फाइनेंस ने आज बहुत छोटा एक रेंज बनाया है, कल अगर आज के ऊपर खुलता है तो बजाज फाइनेंस कैन लाइक शूट अप। एंड ओके, लेट्स टेक सम स्टॉक क्वेरीज। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल टेक some stock queries, and let me also remind you guys that whosoever is interested in joining for the next training which is on coming Sunday, you can WhatsApp and you can join ASAP. Do not keep it for last day. Most of you, I know what you do is you join on last day मत ज्वाइन करिए, क्योंकि आप पहले से ग्रुप में रहेंगे तो आपको एक ग्रुप कल्चर और आपको बहुत सारी बातें जो है पहले से समझ में आएंगी। सो दैट डेफिनेटली हेल्प्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन। ऑल राइट, सो लेट अस टेक सम स्टॉक क्वेरीज। पहला स्टॉक है Godrej Industries. Let me take Godrej Industries को लेते हैं। ओके, सो गोदरेज इंडस्ट्रीज एज ऑफ नाउ कंप्लीटली बेरिश काउंटर है। अगर आप इसमें लॉन्ग में फंसे हैं तो आई थिंक यू आर इन अ ट्रबल। ये स्टॉक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंसेस को, सॉरी क्रूशियल सपोर्ट्स को ब्रेक कर चुका है। Any move that comes, it will be limited to 520. Any doing that is also a mammoth task. ठीक है, सो डाउन ट्रेंड का काउंटर है दोस्त। फ्रेश कोई बाइंग वगैरह तो मैं नहीं, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता हूँ ऐसे स्टॉक में। ओके, बट अगर आप पहले फंसे हैं तो डू लेट मी नो। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है एबट इंडिया। एबट के पहले मैं लेना चाहूँगा व्यू ऑन डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, एंड कल का अगर आपने वीडियो देखा होता तो आज आपको शॉर्ट में पैसे बन गए होते, क्योंकि कल ही मैंने डॉक्टर रेड्डीज को डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया था, और कल मैंने एक शॉर्ट व्यू भी डॉक्टर रेड्डी में आपको बताया था मैंने। सो टुडे 4410 4400 देयर अबाउट से अगेन इट ड्रॉप ऑलमोस्ट आई थिंक 100 पॉइंट्स। सो दिस इज अ पोटेंशियल शॉर्टिंग स्टॉक। ओके, सो दिस इज द जोन टिल 4500। यू कैन लुक टू शॉर्ट, क्रिएट 4600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट 4150 एंड देयर अबाउट्स 41 39 75, ये दो लेवल्स जो है आपके टारगेट है। ओवरऑल these are places of trouble, okay, and sooner or later the stock will fumble from this area. Stock is trading below 233 moving average, so that is a trend deciding level, trend deciding moving average. Next जो है, let me take, I think I missed many stock queries. Abbott India for shorting. देखो सारे स्टॉक्स तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि क्वेरीज बहुत है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। Abbott India for shorting, क्वेरी अच्छा है। क्वेरी अच्छा है इसलिए क्योंकि आपने क्लियर कट पूछा है, बाकी लोग सिर्फ नाम लिखते हैं, एंड देन आई हैव टू इमेजिन कि क्या पूछ रहे हैं। Abbott India, सी Abbott India for shorting इस समय मैं सजेस्ट नहीं करूंगा।
It's a stock which is trading above all the nice moving averages. Okay, plus the structure is higher high, higher lows from the bottom. So there is a potential scope for shorting. छोटा मोटा short ये है आपका 9600 एक major resistance है, which happened to be the bottom of this climactic volume and this big candle over here which took resistance here. So we have a evidence that ये जो लेवल है इसका 16600 700 ये रेजिस्टेंस जैसा काम करता है. सो आई थिंक इट विल गो ओवर देयर, और वहां पे अगर हमें बेरिशनेस दिखता है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे. अभी जो है कोई शॉर्ट नहीं है. अगर आपने सपोज किया है तो ट्राई टू एग्जिट इन आइदर एट कॉस्ट और इन प्रॉफिट. कैन रिलायंस कम टू 2000 लेवल्स? आई डोंट नो. डी मार्ट पे लेते हैं. लेट अस सी. प्रेडिक्टिव एनालिसिस का ये समय नहीं है, ये समय रिएक्शन का है. इसलिए रिलायंस पे मैंने जवाब नहीं दिया. डी मार्ट अगेन अ बेरिश काउंटर, बट एफएमसीजी में थोड़ा सा तेजी आज देखने को मिला, तो स्टॉक में भी थोड़ा सा तेजी हुआ. देखो स्टॉक मरते मरते जो है मे बी 3860 लॉस्ट ग्राउंड, ये जो लॉस्ट लेवल्स हैं इसके 3955 यहाँ तक स्टॉक जो है जा सकता है. ओके, बट स्टॉक इज इन अ क्लियर कट डाउन ट्रेंड. आप लोग ये जो वैल्यू बाइंग कर रहे हो, वैल्यू बाइंग तो आप नहीं कर रहे हो, आप जो है बॉटम फिशिंग कर रहे हो इन स्टॉक्स में. डोंट डू इट, because in the end it's a losing proposition. Stock is in a very simple channelized structure, and I really doubt even if it can go till 3865, which is the lost ground of this my 233 moving average. ठीक है, अधिक से अधिक यहाँ तक मैं देख रहा हूँ. जब तक इस डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर के अंदर है, इट्स अ बेरिश काउंटर. ओके, so that's the view going forward in medium term on Mr. DMart. नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं. निफ्टी तो हो चुका है. निफ्टी बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, एमसीएक्स, फॉरेक्स, सारी चीज़ें हो चुकी हैं. वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए. कोटक बैंक पे कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो कोटक पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. आपको याद होगा ना 1940 ये जो मैंने लेवल दिया था, और हाई क्या बना था 1950, मात्र 10 पॉइंट, एंड देन बैक टू पेविलियन. तो जिन लोगों को याद होगा, इसमें मैंने आपको ये फ्रैक्टल एक्सप्लेन किया था दोस्तों कि ये देखो पहले क्या हुआ था. देयर वाज अ कंसोलिडेशन लाइक दिस, एक पॉपअप होता है और उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे नीचे जाता है, एंड देन इट ब्रेक्स और फिर इसमें तेजी होती है. ये इनका बड़ा ही विचित्र एक तरीका है. ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हुआ. ये आपका था, यानी दिस वाज दिस, देन अ ब्रेकआउट एंड देन डाउन, एंड देन बेसिकली 1 2 3 ये यहाँ पे. तो हम यहाँ पे, ठीक है. अब A प्लस बी इज इक्वल टू सी. ठीक है, तो ये सी बना रहा है, यानी ये दोनों को एक बार नलीफाई करना है अपने को. तो 1640 है. ठीक है, तो ये स्टॉक जब एक बार इसको भी तोड़ के नीचे आ जाए और तब फिर ऊपर वगैरह जाए, तब हम लॉन्ग करेंगे. तो इसमें अभी बहुत सारी प्राइस एक्शन होनी बाकी है. अभी कुछ नहीं होगा, अभी सिर्फ ये एक रेंज में ट्रेड करेगा. मे बी 1600 पे एक सपोर्ट लेगा, एंड देन ये पेंडिंग गैप है 1800 का, तो मे बी 1600 से 1800 के रेंज में बस ये टॉस अराउंड करेगा. बट हाँ, एक थीम बेस्ड रैली, एक थीम बेस्ड ट्रेंड, एक सेक्युलर ट्रेंड मुझे अभी स्टॉक में कदापि नहीं दिख रहा है. बहुत दिनों तक, कम से कम 1-1.5 महीने तक मुझे नहीं दिख रहा है. ओके, अर्निंग्स आने वाली है, सावधान रहना. अर्निंग्स में स्टॉक नीचे है, तो मे बी अर्निंग्स पे, गुड न्यूज पे पॉप करें, डाउन ट्रेंड की टेक्निकलिटी को मेंटेन करेंगे, बट जनता को लगेगा कि स्टॉक में तेजी आ गई है और वापस ये सोल्ड आउट कर देंगे. यहाँ पे इसका फोटो ले लेना, हो सकता है कि यथार्थ इसी तरीके से सारी चीजें घटें. ठीक है, समटाइम्स रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स, सो कोटक बैंक हो गया. कोटक बैंक पे हो चुका है. आरबीएल बैंक, देखो आरबीएल को पूरी तरीके से तोड़ने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है. ठीक है, तो जो लोग पहले से जानते हैं मुझे, आपको पता है कि आरबीएल जो है, इसे कितना लगाव है हमें, और आरबीएल को हम कई सालों से सिर्फ तोड़ते आए हैं, यानी सिंपल शब्दों में शॉर्ट करते हैं. सो आरबीएल माय डियर फ्रेंड इज, मैंने प्रॉमिस किया था एट द हाइट ऑफ कोरोना एंड व्हेन थिंग्स वर रैलिंग, दैट आरबीएल, आई विल इंश्योर कि आरबीएल जो है डबल डिजिट में है.
और ये प्रॉमिस मैंने लास्ट मंथ में पूरा किया। 77 100 का आंकड़ा ब्रेक। अब आरबीएल के लिए 100 और 110 को क्रॉस करना, ये एक जो है मैं क्या कहूँ, मतलब इट्स लाइक हरकुलियन टास्क, ठीक है। सो सेल ऑन राइज प्योर, ओके। सो टिल 110 दिस गैप, ये जो गैप है ना, बस ये गैप जब तक इस गैप के ऊपर नहीं जाता, एडीएजी जैसा स्टॉक है ये, it will go all the way much lower also, so keep that thing in your mind. Okay, let's take couple of stocks. uh igl Indraprasth Gas, igl. Okay, see igl, simply from the chart what can you say? Stock is bearish. Stock is bearish. Stock is bearish even before broader markets became bearish. Okay, so what is this? This is nothing. This is just a pathetic, chart, and at best you can get is 420, 420, वो भी मरते मरते, ठीक है। सो स्टॉक में अभी बहुत ही रेजिस्टेंस है, 380 370 का बहुत शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस है, और मिड टर्म में 420 को मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक किसी भी कीमत पे क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। सो आई एम बेरिश ऑन दिस स्टॉक फॉर द टाइम बिंग, ओके। एंड इफ वी डू गेट 420, then I would like to short it for one more attempt towards bottoming, and then if it moves higher I will buy in bulk, because that would mark the end of this downtrend, ठीक है। फिलहाल 370 75 80 ये आपका मेजर रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता कि इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। अगर गलती से कर दिया तो 420, दिस इज लाइक लाइन इन दी सैंड। ऐसे स्टॉक में पैसा डालना बिल्कुल नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि दीज आर इन अ डाउन ट्रेंडिंग। इसमें आपको बहुत लक फैक्टर की जरूरत पड़ने लगती है, अच्छे न्यूज़ की जरूरत पड़ने लगती है। सो व्हाई डू यू वांट टू डिपेंड ऑन न्यूज़ एंड ऑल दोस थिंग्स? अपने टैलेंट पे पैसा कमाना है अपने को, अपनी मेहनत पे। दैट्स इट, दैट्स ऑन आईजी। कुछ व्हाट इज दिस क्वेरी? डेटा पैटर्न सर, मीडियम टर्म डेटा पैटर्न, क्वेरी आपकी समझ में नहीं आ रही, राइट? वेरी क्लियर कट क्वेरी। आईजीएल आई हैव एक्सप्लेन। नौकरी.com पे क्वेरी है, लेट मी सी, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेते हैं। नौकरी.com, info edge. So this was also a stock which we were very bullish in the preceding bull market, and then we left this stock once it broke this bottom near 5200, and it was a very wise decision। 52 से स्टॉक 3200 आ गया। सो मैंने हमेशा कहा है कि शेयर मार्केट में जो है निकलना सीखो, एग्जिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोज हु नो हाउ टू एग्जिट द market will always reward them. Now I like this channel right now, I like this stock right now for a couple of reasons. Number one, this was the selling climax, this is the secondary test, and over here I can see one big buying volume which generated a very nice up move, but that had to stop here because of the uh, resistance, heavy duty resistance that is coming from the suppliers, right? And it had to again do a lower low, that did not make a new low, again we are seeing a up move. So this is basically coiling structure, it is it is coiling right now, so it's a VCP of a different sort, ठीक है, हालांकि डाउन ट्रेंड में है। तो अब ये जो स्टॉक है ये एक्सप्लोजन करने वाला है, या तो ये स्टॉक आएगा 4200 पे, या तो ये स्टॉक जाएगा न्यू लो पे। सिंस आई कैन सी देयर इज अ अर्निंग्स कमिंग, देयर इज अ गुड चांस कि ये इसे पंप करें पहले, ठीक है। ये हो गया एक व्यू की बात कि इट इज सेटिंग अप फॉर सम एक्सप्लोसिव मूव्स, वी डोंट नो विच साइड। राइट नाउ इट्स इन अ डाउन ट्रेंड, बट एट द सेम टाइम इट इज लुकिंग दैट इट विल ब्रेक आउट, ठीक है। अब थोड़ा सा फाइनल डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। So this stock, if you are holding long, then keep the 3500 as a stop loss, not more than that. And if you see this stock cracking towards 4200, okay, hold करिए उसको, hold करिए, trail करिए, ठीक है, because in that case it can go all the way till 46. So for a bullish scenario, ठीक है, स्टॉप लॉस इसको रखिए सबसे पहली बात। दूसरी बात, 4200 जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो होल्ड करो, बुक मत करो,
ठीक है, पहली लास्ट टाइम हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुके हैं, सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू ब्रेक आउट, ऑल्सो वी आर डूइंग द volatility contraction. So we once we are through the 4200 we will second target 4700. सो डिटेल में समझा चुका हूं, मेक द मोस्ट ऑफ इट। अब इस व्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेटा पैटर्न, होल्ड और एग्जिट, व्हाट इज दिस डेटा पैटर्न? लेट्स सम स्टॉक data patterns India. Okay, I thought you are referring to option chain or something like that. Okay, so data pattern India, पहली बात तो भाई कहाँ से खोज के लाते हो इस स्टॉक को? ठीक है, आईपीओ वाला काउंटर है, हार्डली इसमें कुछ ट्रेडिंग हुआ है, इट इज डूइंग नथिंग, इट इज ट्राइंग टू फिगर आउट इट्स यू नो व्हाई इट इज एग्जिस्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये क्वेश्चन कर रहा है, हु एम आई, वेयर एम आई, व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ। सो ये स्टॉक को छोड़ दो, अभी ऐसे नन्हे बच्चों को अभी ज्यादा एनालाइज नहीं किया जाता है, जस्ट लीव द स्टॉक। इफ यू आर अ बायर देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्रॉफिट दिखे या कॉस्ट पे आए तो निकल जाओ। टाटा केमिकल्स, नेक्स्ट क्वेरी है टाटा केमिकल्स, काफी देर से ये क्वेरी पेंडिंग है, लेट मी टेक दिस स्टॉक टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल somebody has bought from 890, ओह ठीक है, तो आपने जो है टिपिकल ये सपोर्ट देख के बाय कर लिया होगा, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली द रॉन्ग थिंग टू डू। अगर आप लाइव सेशंस को पहले देख रहे होते तो आपने समवेयर यहीं कहीं आपने जो है ना लॉन्ग्स को एग्जिट कर दिया होता और इसके डाउनफॉल में, इसके ट्रैप में नहीं फंसते, राइट। सो दिस स्टॉक माय व्यू वाज, फर्स्ट हम जो है यहाँ से एक बार बुलिश हुए थे एंड देन इसे हमने क्लियर ऑफ कराया था 1050 पे। जितने भी अपने फॉलोअर्स हैं आपको अच्छे से बात पता है। नाउ लुक व्हाट हैपेंड हियर, प्राइस एक्शन 101, व्हेन यू फेल टू टेक आउट अ स्विंग हाई and you start to go lower, just dump this stock, and that is what they did, they dumped this stock. In doing so they broke the medium term trend line, they broke the demand zones, they broke all the moving averages. So all in all क्या होगा, आपका जो भाव है 890 का, ये अब एक इतना प्रचंड रेजिस्टेंस बन चुका है कि इसको ये स्टॉक तोड़ने में जो है ये मतलब बहुत कठिन है इसको ब्रेक करना। सो ये पहले राउंड में तो होगा नहीं, सो इट विल एट बेस्ट ट्रेड इन दिस जोन ऑफ 750 और सॉरी 780 टू 890, ठीक है, एंड लेटर ऑन वी विल कम टू नो कि ये किस साइड जाना चाहता है। अगर ये समय इसमें स्पेंड करने के बाद इन दिस चैनलाइज स्ट्रक्चर इफ इट इज एबल टू लाइक कम अप हायर तो फिर हम लॉन्ग करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। सो ऑल इन ऑल अगर आपको भाव मिलता है तो बॉस एग्जिट कर दो, नहीं तो ये जो बॉटम्स है इनको स्टॉप लॉस रख के बुक लॉस फॉर सम टाइम। देखो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग रखोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा, अगर रैंडम काम करोगे तो फिर। व्हाट अबाउट जोमेटो, देखो जोमेटो स्विगी इनसे जो है ना हम ऑर्डर ही नहीं करते, सो स्टॉक तो बहुत दूर की बात है। ये सब स्टॉक आपको याद होगा अक्टूबर का महीना, सितंबर का, सॉरी अक्टूबर से लेके नवंबर जितने भी आईपीओ उस समय आने वाले थे, ठीक है, आपके नाइका, जोमेटो, बहुत सारे आईपीओ थे, जितने मेरे ग्रुप मेंबर्स थे सबको मैंने क्लियर कट बोल दिया था, इनमें पैसा लगा रहे हो तो मेरा ग्रुप छोड़ दो, यानी तुम्हें मार्केट का कुछ भी ज्ञान नहीं है। और मैक्सिमम रिटेलर्स ने उसी समय पैसा लगाया था। नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं, फाइम इंडस्ट्री मंथली चार्ट, इफ ब्रेकआउट कैन वी बाय। पहली बात तो हम ब्रेकआउट को ज्यादा बाय नहीं करते दोस्त, ठीक है, दैट इज व्हाट द ट्रैप इज। अब आपको ये लगेगा कि ये ब्रेकआउट है, मुझे लगेगा कि ये पीक है, समझ गया बात को। सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करो, अगर यदि ये ब्रेकआउट है तो इसे समय दो, ये भविष्य में जब रीटेस्ट और ऑल दोज करेगा तब हम बाय करेंगे। सो अभी के लिए हायर वॉल्यूम्स, बिगर कैंडल्स, रेजिस्टेंस, कॉल्स फॉर exit for now and keep it on your radar, because if the breakout is genuine it will have future legs, so nothing to worry. नेक्स्ट क्वेरी, निफ्टी ऑटो पे व्यू चाहिए। सी ऑटो इंडेक्स कंपैरेटिवली बुलिश है, बट अगेन केस टू केस बेसिस पे डिफर करेगा। So some auto stocks will be bullish, some will be bearish. So don't go with the sectoral view right now because we are not in a secular bull market in any of the sectors. ठीक है, स्टॉक के बारे में पूछिए।
M&M view, Mahindra and Mahindra. So let's take Mahindra and Mahindra, M&M. ठीक है. This will be last query. Then we are winding up. हम already 1 घंटा कर चुके हैं. See, M&M is a very bullish counter, and I really like the chart of M&M on all the grounds. It is very very nice. But here, ठीक है, you should book profits. One up move can come. It is again making a small pennant pattern or a flag, whatever you want to call it. So probably one up move can come, but I would advise to book out. If any up move comes 1140, try to book out and wait for some correction to happen. Okay, the stock will do some correction, and probably in that case from 1140, if we can see 1040, that will be the time to buy. So you can draw this channel, keep it handy, and सिंपल सा स्टफ है. चैनल बॉटम्स पे हम बायर हैं और चैनल रेजिस्टेंस पे हम ये है सेलर है. सेलर यानी प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्टर नहीं, सेलर. ठीक है, बस इस चीज को सिंपल तरीके से फॉलो करना है. दैट्स इट. ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है. जहां पे चार्ट्स क्लियर हो वहां पे अपने दिमाग लगा के उसे खराब मत करो. ब्रिटानिया, वेरी गुड क्वेरी. कल ब्रिटानिया हमने डिस्कस किया था कि 3700 आना चाहिए. 3700 आ चुका है. आज क्लोज भी उसके ऊपर हुआ है. एंड सो यू कैन होल्ड, बट थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी प्लीज करना, क्योंकि बैक टू बैक 3 कैंडल्स आ चुके हैं. ठीक है, सो सच कैंडल्स आर जनरली प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स बाय द प्रमोटर्स. सो ट्राई टू एग्जिट बिटवीन 3750 टू 3850 के रेंज में. यहाँ पे your view on long term portfolio. जब long term का टाइम आएगा, I'll be the first person to tell you. मनपुरम कॉल 93. देखो, कॉल पुट का गेम गलत स्टॉक में करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा. So this Manappuram and all these stock, they are not your typical option wala stock. Manappuram, what is the spelling? Let me see. Manappuram Finance, I think it had come. Yeah, so Manappuram Finance, एक बार चार्ट्स देख लेते हैं. Let me see. Okay, so needless to say, बहुत ही बेरिश चार्ट है, बट आई थिंक इसने पूरी तरीके से करेक्शन भी शायद कर लिया होगा. See, this stock will die out by reaching 96 and 97. Okay, at best 100 जा सकता है, at best. Okay, so very very bearish counter as of now. In future it might get repaired, but अभी तो ना, अभी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है. Okay, so don't invest much of your capital. 100 is a very strong resistance. ठीक है, so that's all. And last query, TVS मोटर एक बार ले लेते हैं. आज 3 बार ये क्वेरी हो चुकी है. TVS मोटर कंपनी 835 पे लॉन्ग है आप. ठीक है, सो सबसे पहली बात, तुरंत निकल जाओ. ओके, व्हाई आई एम सेइंग तुरंत निकल जाओ? बिकॉज पुल बैक पे लॉन्ग किया जाता है, चढ़ते हुए मार्केट में लॉन्ग नहीं किया जाता है. 2020 में यही सबको मार्केट ने सिखाया, और सब जो है चढ़ते हुए मार्केट में लॉन्ग करते गए और चढ़ गए. ठीक है, और फिर जब अक्टूबर से करेक्शन हो रहा है तो सबका नशा उतर गया. पोर्टफोलियो चढ़ गया ऊपर, नशा नीचे उतर गया. सो डोंट रिपीट ऑल दिस सिली मिस्टेक्स. If you have missed the breakout trade, if you have missed the previous, this trade over here, it was a nice place by the way, inside bars then breaking out, fantastic trade structure था. यहाँ नहीं कोई ट्रेड है, और इसीलिए ये बिग वाइट कैंडल है, यानी इसमें किसी ने बुकिंग की है. कोई भी अपमूव आता है, एक बार निकल जाइए, और इसे हम अपने रडार पे रखेंगे. रीसेंट जो स्विंग हाई था 820 से लेके 800 वाला जो जोन है ना, अगली बार यहाँ बाय करेंगे. स्टॉक अच्छा है, ऑटो, मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स आर बुलिश, राइट. सो इसका फायदा हम उठाएंगे भविष्य में, अभी नहीं. अभी यहाँ बाय करके फंसने का कोई मतलब नहीं है ना. अगर ये नीचे गिर गया 700 तक तो फिर आप फंस जाओगे. देन अगेन वी आर एट द मर्सी ऑफ मार्केट. सो व्हाई डू वी नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स? फॉलो द स्ट्रक्चर, फॉलो द प्रोसेस. ठीक है, दैट्स ऑल. लेट्स वाइंड अप फॉर टुनाइट. 1 घंटे के ऊपर का लाइव स्ट्रीम हो चुका है, सो वाइंड अप करेंगे दोस्तों. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोज हु विश टू ज्वाइन फॉर द ट्रेनिंग ऑन July 10th, you can
WhatsApp, and you can join as soon as possible. Thank you so much. Wish you all the best. Take care. Good night. Jai Mata.